Hi everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are going to solve a practice RC passage, and the genre is a really very interesting one, art history. So without any delay, let's go ahead, try to take a look what the passage is about is, and then you can also solve the questions on your own. Okay, so I would recommend that you pause the video here, read the passage, then go to the timestamps which I've mentioned in the description box as well as in the comment section. Please click on those respective timestamps, go to the questions, jot down your answers, and then you can come back to this point and then walk yourself through the explanation. Okay, so chalo, starting off with the explanation regarding passage now. This passage, if you go through it, there are a lot of terms here and there which are very, the context of those terms is very Christian, very European Christian in terms. Okay, I've highlighted a lot of different words which is possible that you might not be completely aware of what these terms are. So what I've done is I've compiled a glossary for you. Please go through this passage, those words, and then also take a look at what the meaning of these words is. That will help you deepen your understanding of what the passage, what the author is trying to tell you. A proper imagery should be able to crop up before your eyes. And in pursuant of that idea, I have actually gone a step ahead this time and put together some things to ensure that you can visualize this passage really, really well. Okay, so going ahead, some of the terms, some of the imagery that I think which is important for you to know when you are going through the passage in order to understand what the author is trying to talk about. So this is what we call as the altarpiece. Okay? In a church, what usually happens is what you have is this body over here, this table, as you can see down over here. I am not sure whether you can see the color scheme because of a lot of colors already present in the pic. Okay, this table you can see, this can be called as the altar. A lot of religious rituals are done using this altar on it, and altarpiece is something, a very beautiful, very good piece of art, sometimes a painting, sometimes a kind of sculpture which is placed on the altar or behind it. Okay, so in this case what you have is this massive altarpiece is behind the altar, and you can have the priest or the clergy standing in between the altar and the altarpiece, and he will be carrying out religious rituals. So what a good altarpiece can do is it can create a really solid religious vibe. It can give a very mystical, very holy touch to the environment. So as you can see in this image itself, you can immediately try to judge अगर ये altar piece यहाँ पर ना हो, what is the altar piece here? Let me move my laser pointer. This vast body of work. Imagine if this were not present here. What would you have is simply this windows going from the ceiling to up to here. इतना massive impact नहीं होता ना. But the moment this altar piece, this piece of art is kept over here, it gives such a solid, strong religious look to it. Okay? So this is called as the altarpiece. Mentioned in the passage, you can go back and see where it is used in what context. Moving ahead, this is what is called as a fresco. Fresco एक painting ही होती है, but this painting is not done on canvas or on a piece of paper. It's a wall painting, and the material which is involved is lime plaster in some way. ठीक है, we are not going to get into details of how these paintings are done. Lime बोले तो हमारे हिंदी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं चूना. ठीक है. So what you can see on the screen is a world famous fresco created by really famous artist by the name of Michelangelo. Many of you might have even heard his name one way or the other, Michelangelo. Okay, and I think if I'm not wrong, the place is Sistine Chapel in Italy. Okay, you can Google for this image, or if you are a fan of Hollywood movies, European movies, a lot of those movies tend to show this image now and then, depending on the storyline. Okay, I can distinctly recall there was this movie 2012 which came around in 2009-10, showing apocalypse happening in 2012. So when apocalypse starts hitting Earth, the entire oceans rise and everything is sinking. What they show is an earthquake happening, and a crack goes through this gap between the fingers of God and man. So visual impact, of course, some kind of symbolism being conveyed by the movie creators. तो ठीक है. Anyway, fresco meaning a wall painting. इसका एक अच्छा एग्जांपल अगर आपको देखना है, if you have visited Ajanta caves in Maharashtra, India, so the paintings that you can see on the wall, they can also be technically called as frescoes. ठीक है. So wall paintings involving some kind of lime plaster and also has a really long everlasting permanence वाला touch मिल जाता है.
ठीक है, मूविंग अहेड, FEG means small statue. So as you can see here, there is a statue of a man and a woman can be seen here. I don't know the context of these two statues here, but टेक अवे पार्ट इज FEG का एक मीनिंग ये भी निकलता है छोटे स्टैचूज, नॉन गॉड वाले स्टैचूज. अनदर मॉडर्न डे मीनिंग स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडियन कल्चर और इंडियन कॉन्टेक्स्ट, FEG का मीनिंग हैज बिकम अ बिट डिफरेंट. दशहरा विजयादशमी के दिन जो रावण की मूर्ति जो जलाते हैं ना, रावण दहन जिसको कहते हैं, लार्जली डन इन नॉर्थ इंडिया एंड ऑल. तो जो रावण की उस कठपुतली को, जो उसकी बड़ी मूर्ति को जलाते हैं हमारे यहाँ पे, दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एन FEG. ओके, so if you go through English newspapers after the event, so you can see this sentence coming across कि after the FEG of Ravan was burnt, the crowd erupted into cheers and all that stuff. ठीक है. And if you also take a look at some violent protests going on here and there, where people are expressing their anger at some person, so what they do is they also create a mock statue of that person and उसको आग जला देते हैं. ठीक है. So that statue, which is a very shabby piece of artwork, कुछ तो random scarecrow type situation create करके जिसको जला देते हैं वो body को, that can also be called as an FEG. But in the context of the passage that we are going to see, FEG means small statues like this. ठीक है, चलो. And lastly, the coat of arms present over there in the last paragraph. Coat of arms is something, if you are a Harry Potter fan, so this is Hogwarts School का coat of arms है कि an emblem or a very distinct imagery which conveys कि अच्छा, okay, this symbol, this logo stands for so and so family or so and so institution. So this, as you can see here, I have taken it from Harry Potter. ठीक है. This is the coat of arms for the Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. On the right hand side, you can see the national emblem of India. Actually, I was surprised when I googled coat of arms images. So one of the images came forth was this when I visited the website. So they are saying ki what is the coat of arms for the Republic of India? So answer was given, the national emblem, the Ashok Stambh वाला जो ये हमारा national emblem है, this can also be called as the coat of arms for the Indian Republic. I know that we are not used to using this term. Coat of arms is largely, again, a Western European Christian term. What we are used to saying over here is emblem, national emblem of India, and it is this. Okay? So this was just to give you a fair idea, so that when you read the passage, you are able to understand कि अच्छा exactly क्या बात हो रही है. Because the terms that have been used in the RC passage, they are not something that we as Indians are habituated. ठीक है. चलो, I hope that a fair amount of this imagery is clear to you. Let's go visit the questions. ठीक है, चलो, one by one we'll go through the paragraphs and then we'll attack the questions. बहुत अच्छा नैरेटिव है, पढ़कर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है if you have even a little bit of interest in history. What does the passage say? कि women were also patrons. Okay, patrons का मीनिंग होता है कि people who support artists financially. Now the context that you have to keep in mind is, let's pick up a very famous guy from Renaissance era, Leonardo da Vinci. Okay, the guy who painted Mona Lisa. So artists like Leonardo da Vinci, ऐसा नहीं है कि उनके मन में आ गया और वो पेंटिंग और स्कल्पचर्स बनाते रहते. No, it's a very famous guy, very skilled, so this guy is not going to work for free. What used to happen is very rich, very elite people used to call these guys and tell them, बॉस मेरा ना मन कर रहा है, आप प्लीज मुझे ऐसी ऐसी पेंटिंग बना के दो, उसके बदले में आई विल पे यू सम मनी. समटाइम्स चर्च और इवन द पोप माइट कॉल ऑन सम वेरी रेप्यूटेड आर्टिस्ट एंड टेल देम कि बॉस देखो ये नया चर्च बन रहा है, प्लीज इसमें ना तुम्हारे कला करके कोई स्टैचू या कोई बहुत सुंदर पेंटिंग बना के दे दो. So of course in turn you guys will be paid. So this was called as the patronage, wherein you are paying the artist for creating a work of art, whether it be a painting, a sculpture, or even some monument entirely. And generally this was done as a sign of a status symbol. Okay, अमीर लोग या politically or religiously powerful people would do this large. So passage says कि सिर्फ आदमी लोग नहीं थे patrons. Women were also patrons when it comes to the Renaissance era. And why is
इट इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कोई वर्क ऑफ आर्ट का कोई पैटर्न कौन था। अगर कल जाके समझो यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्टैचू क्रिएटेड बाय सम आर्टिस्ट, तो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसको कमीशन किसने किया, ये बनवाया किसने, was it a guy, was it a man, was it a woman, because of the factors mentioned over here. Author says कि जो पेट्रन था आपका या थी, he was the initiator of almost all major artistic project, and it was this patron who determined the major features of that art, most important features and characteristics, including what things, कौन से मटेरियल से बन रहा है, कहाँ डिस्प्ले होगा, whether it will be portrayed in a personal gallery, whether it will be donated to a religious institution, what will be the subject it depicts, कौन सी स्टोरी बता रहा है, किस इंसान की किस चीज की पेंटिंग है। फॉर एग्जाम्पल लेनोर्डो डा विंसी ने जो मोनालिसा पेंट किया है, मोनालिसा इज एक्चुअली द वाइफ ऑफ अ वेरी फेमस बिजनेसमैन। Da Vinci started painting it, but he did it so slowly, and he was able to finish it after a lot of time. And when he finished it, he did not give it to that businessman. He kept it with himself. And later on, it became a part of the royal family of France का collection हो गया वो। तो this is how the patron was able to decide कि किस चीज की पेंटिंग बनेगी, कौन सा मटेरियल यूज होगा, साइज कितना, ग्रैंडियर कितना, पैसा खर्च होगा उसके ऊपर में। ओके, a lot of things patron was able to determine, and that is why it is important to know not only the artist who created some art but also किसने वो काम करवाया। ठीक है, एंड यस, इट इज नॉट 100% गारंटीड कि आपको पता चल गया कि पेट्रॉन कौन है तो उसके दम पे आप सब कुछ बता दोगे आर्ट बुक के बारे में, ऐसा नहीं। बट you will be able to understand a lot of things, you will be able to understand the motivation behind that piece of art। ठीक है, so regarding this, what does the author say? The author is saying कि many of the habits and concerns women और men के बहुत सेम थे, but there was one special condition when it came to women patrons, and what was that? कि they were often widows या फिर nuns, they were most often widows या फिर nuns living in convents, meaning that female priests, okay, women who have given up sansari jivan, women who have given up the ties of family and marriage and going and doing religious work, सन्यासी हमारे हिंदी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं। ठीक है, एंड व्हाई वाज दिस सो? तो सॉर्ट ऑफ अ नो ब्रेनर, बिकॉज a woman generally did not have the financial independence or the financial resources if she were married to a guy। अगर हस्बैंड है तो सारा का सारा पैसा तो हस्बैंड के हाथ में, ओनली इफ द हस्बैंड वर रिच एंड पास्ड अवे बिफोर द वाइफ, तो फिर वो सारा पैसा वाइफ के हाथ में आता है। एंड आफ्टर दैट द वाइफ इज एबल टू हायर एन आर्टिस्ट एंड क्रिएट समथिंग कि अच्छा बॉस चलो आप अब ये पेंटिंग बना दो या ये बिल्डिंग एक मॉन्यूमेंट बना दो। तो ऐसे केस में व्हाट वुड हैपन इज कि let's say you have a woman named Elizabeth। Okay, we'll go through the last couple of paragraphs using an example. Let's say there is a woman named Elizabeth, and let's say her husband's name is Philip। Okay, so what the author says here is, let's say कि Philip has passed away and Philip का wealth has passed on to Elizabeth। Now what does Elizabeth do? So she commissions a piece of art, and what exactly a lot of time this is going to be, तो उस टाइम पे देखो जो सोसाइटी, इट इज वेरी पेट्रियार्कल इन नेचर। सो व्हाट दिस विडोज लाइक एलिजाबेथ आर एक्सपेक्टेड टू डू इज कि ठीक है आपके पास पैसा आ गया है, यू आर कमीशनिंग अ वर्क ऑफ आर्ट, मेक श्योर दैट इट इज डेडिकेटेड इन सम फॉर्म टू योर हस्बैंड। ठीक है, तो फॉर अ लॉट ऑफ टाइम in 15th and 16th century, what widows would do is they were most prominently concerned with what? With commissioning an artwork, with commissioning a monument, which was a sort of a building which was dedicated to the memory of the husband who has passed away। Maybe it's a place जहाँ पर let's say फिलिप की बॉडी बेरिड होगी और उसके आजू बाजू एक मॉन्यूमेंट क्रिएट कर दिया। फिलिप को आपने कोई ऐसे ग्रेवयार्ड में कॉमन इंसान की तरह बेरी नहीं किया है, आपने उनको एक स्पेशल जगह पे यू हैव पुट हिम इन द ग्राउंड एंड सराउंडिंग इट यू हैव बिल्ट अ मॉन्यूमेंट।
इसका अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम एग्जांपल ले तो थोड़ा सा वाइस वर्सा टाइप सिचुएशन है। ताजमहल। Okay, what is the story? That Mumtaz Mahal passed away. Shah Jahan was heartbroken, and as an everlasting memory of Mumtaz, he got Taj Mahal made. And after, and in the Taj Mahal, primarily Mumtaz ki body was kept. And of course, after Shah Jahan also passed, so his body was also kept in the Taj. ठीक है? So here vice versa is happening in Europe. That Philip has passed away. What does Elizabeth do? She erects an monument. She erects a monument dedicated sort of to Philip. ठीक है? And what is so special about it? So sometimes in that monument there might be a small statue of Philip also present there. वो चीज यहाँ पे लिखी है कि sometimes it included an effigy of the deceased spouse. Sometimes, but not all, not necessary. Optional चीज है. बहुत रेयर केसेस में कभी कभार वो वुमन इन दिस केस एलिजाबेथ और फिलिप दोनों के एफिजीज वहां पर रहेंगे. वाइफ्स कैन ऑल्सो अपीयर समटाइम्स along with their husbands. Very rare, very rare. Now, not necessary as effigies, not necessary as statues, but maybe the altarpiece which I show, which was displayed to you on the screen a few moments ago. ठीक है? एक बहुत बड़ी पेंटिंग या फिर एज अ वॉल पेंटिंग दोनों डिस्प्ले किए जाएंगे, the woman as well as the husband. Maybe, maybe. An example given for that is this place. There is this some chapel and portrait of Nera Corsi in the Sassetti chapel. Okay, but what is so special about this Nera Corsi in the Sassetti chapel is कि ये एलिजाबेथ जैसे वुमन ने नहीं किया. The woman passed away. The husband was still living, so the husband got it made. Philip. बट ऐसा दूसरे केसेस में हम बोल सकते हैं ऐसा भी हुआ होगा वेयर द हस्बैंड हैज पास्ड अवे, द वुमन हैज इरेक्टेड अ मॉन्यूमेंट इन मेमोरी ऑफ दैट हस्बैंड, एंड उन दोनों की हस्बैंड वाइफ की वहां पर स्टैचू है या फिर पेंटिंग रहेगी कुछ ना कुछ. ओके, कमिंग टू द लास्ट क्लोजिंग रिमार्क्स इन द लास्ट पैरा नाउ. वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स कमिंग इन. बहुत अच्छा लगता है पढ़ के दैट चलो पकड़ के चला कि एलिजाबेथ हैज क्रिएटेड अ मॉन्यूमेंट. वहां पे फिलिप का शायद छोटा मोटा कोई स्टैचू भी लगाया है, एंड एलिजाबेथ का वहां पर ना स्टैचू है ना पेंटिंग. तो फिर क्या, हम तो भूल जाएंगे कि एलिजाबेथ ने किया ये. आगे की जनरेशन आएंगी वो तो देखेंगे भैया यहाँ पे तो फिलिप की मूर्ति है. एवरीबडी विल रिमेंबर फिलिप ओनली. So in that case, what the wife, what the woman could do is she could have some kind of inscription mentioned somewhere. कि देखो ये बिल्डिंग मैंने बनवाई. She could remind posterity of her role. Posterity मतलब आने वाली सारी जनरेशन, सदियों तक, आने वाली अगली बहुत सारी पीढ़ियों तक के. She could leave a message there in that building, in that monument. That okay, boss, it was me, Elizabeth, who got this made. तो कैसे कैसे, तो समटाइम्स इट माइट बी सम काइंड ऑफ नेम, सम काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन, या फिर देर माइट इवन बी अ कोट ऑफ आर्म्स एज वेल. कोट ऑफ आर्म्स हमने देखा, अ सिंबल जो स्पेसिफिक किसी एक फैमिली, किसी एक इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करता है. सॉर्ट ऑफ योर पर्सनल स्टैम्प आप एक प्रकार से समझ. वेरी ग्रैंड, वेरी आर्टिस्टिक इन नेचर, ऑफ कोर्स नॉट अ प्लेन रबर स्टैम्प, बट इफेक्टिव रोल उसका वही है. यूनिक हॉलमार्क एक प्रकार से आप समझ सकते हो. ठीक है. एंड लास्टली क्लोजिंग रिमार्क्स नाउ. वुड द वुमन बी डूइंग ओनली दिस थिंग कि यार हस्बैंड मर गया है तो चलो अभी उनकी याद में ही कोई बिल्डिंग खड़ी कर देते. नॉट नेसेसरी. पीपल हु वर एक्सट्रीमली रिच, एक्सट्रीमली पॉलिटिकली पावरफुल, in that group there were a very small number of women who commissioned buildings, who commissioned works of art जो कि नॉन रिलीजियस, नॉन फ्यूनररी थे नेचर में. कि चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टर हस्बैंड की डेथ हो गई, जरूरी नहीं है कि हम उनके अराउंड ही कोई मॉन्यूमेंट बनाएंगे. नो, वी विल क्रिएट सम अदर काइंड ऑफ आर्ट. वी विल हैव some other, maybe let us say very beautiful painting made, maybe some very beautiful sculpture made which has absolutely nothing to do with the husband. And what is the author's remark about such creations? Author is saying कि ऐसी चीजें ज्यादा टिकी है. They were much more impressive, they were much more lasting in life. एग्जाम्पल पकड़ो, इन दिस केस की एलिजाबेथ है, मिस्टर फिलिप की डेथ हो गई, बट एलिजाबेथ इज लाइक चलो ठीक है जाने दो, जो हो गया सो हो गया, फिलिप गए गए, बट नाउ आई एम गोइंग टू कमीशन अ वर्क ऑफ आर्ट विच इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सीनरी by a very famous renowned painter.
तो ऑथर से ऐसे केस में वो सीनरी वाली पेंटिंग, इट विल बी मच मोर इम्प्रेसिव, इट इज गोइंग टू लास्ट मच मोर देन अ वर्क ऑफ आर्ट डेडिकेटेड टू जस्ट फिल्म। ठीक है। सो राउंडिंग ऑफ द पैसेज इन वेरी क्विक टू सेंटेंसेस, women were also patrons of arts back in renaissance time, back in medieval ages. Secondly, जो maximum work of arts वो करवाते थे, they were some kind of dedicated to husband only. Maybe it's a building, maybe it's a sculpture, whatever, largely dedicated to husband and the passed away husband का memory. और खुद का प्रेजेंस उस वाइफ का कभी कभी रहता था, कभी कभी ना भी हो। दैट्स इट, सिंपल एज दैट, नो कॉम्प्लेक्सिटी एनीवेयर, रियली गुड इंफॉर्मेटिव आरसी पैसेज। इफ यू हैव अ क्यूरियस बेंड ऑफ माइंड, इफ यू लाइक knowing some tidbits about history here and there, so for people like those, really interesting passage. Let's go take a look at the question now. Okay, chalo, very easy, very straightforward question. Which of the following contradicts the impression? What impression? कि widows and nuns, they left a really solid impact, good positive impact on the art world. और इस नोशन को आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना है, मतलब तोड़ने की कोशिश करना है कि नहीं नहीं, विडोज एंड नन्स ने ना कुछ खास काम नहीं किया आर्ट। So you want to have an option where maybe it is given that the majority of widows and nuns did not care about art at all. Very, very few did it. और जो भी करते थे ये मन मार के करते थे, इनका खुद से दिल से तो कोई इच्छा नहीं थी शायद, समथिंग लाइक दैट। बट डू वी हैव एनी ऑफ दैट इन ऑप्शन एबीसी? नो, ऑल थ्री ऑप्शंस एबीसी रादर सपोर्ट द इंप्रेशन कि नहीं, दिस विमेन लाइक दिस विडोज एंड नन्स, दे वर वेरी strongly inclined towards the field of art. So answer has to be none of the above. Very simple, very straightforward, no complexity. Nonetheless, if you have any doubts still, please drop them in the comment section. ठीक है? As you can see, really straightforward, कितना प्यारा passage है. No worries at all. चलो, very good question. Which of the following is most true about a given Renaissance widow? Renaissance widow के बारे में हमारे पास में क्या information है? Let's mark over here this 15th and 16th century widows. Okay, Renaissance wale widows, what were they concerned about? They were concerned largely about erecting an appropriate funerary monument for their husbands. Highest priority उनकी यही थी, यार हम husband की याद में एक monument बनाएंगे। तो answer of this has to be what? Answer has to be straightforward B, regular database questions. ठीक है। बाकी ऑप्शंस ए सी डी में कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शंस है। फॉर एग्जांपल इन ऑप्शन सी, हाउ आई कैन थ्रो इट, यहाँ पे लिखा है ऑल मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडेड एफिजीज। ठीक है, बट व्हाट डज द पैसेज टेल अस? लेट्स गो टेक अ लुक। सम बट नॉट ऑल इंक्लूडेड एन एफिजी ऑफ द पास्ट अवे स्पाउस। सम पैसेज ने खुद ने बोला है, खुद ने गारंटी दी है, सारे के सारे नहीं। और ऑप्शन सी क्या बोलता है? सारे मॉन्यूमेंट्स। हाउ कैन यू मेक अ डिस्टॉर्शन लाइक दिस? बाय बाय। Similarly, in option D, the problem is with the word only, and option A में distortion ये है, first half is okay, they wanted to make mausoleums. Mausoleums मतलब buildings like Taj Mahal. You have a grand building, but effectively it is a place which houses graves. ठीक है, people who have passed away. That is called as a mausoleum. तो यहाँ तक ठीक था, बट सेकेंड हाफ इज रॉन्ग कि दैट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। नो, दैट इज जस्ट अ हैप्पी कोइंसिडेंस ऑफ सॉर्ट्स व्हिच हैपेंड इन द केस ऑफ आर्टेमिशिया, कि उन्होंने अपने हस्बैंड किंग मौजोलस के लिए बनाया और वो बिल्डिंग इतनी फेमस हो गई कि इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बट अदर विडोज आर नॉट कंसर्न्ड नेसेसरीली, व्हाट दे आर कंसर्न्ड विद इज भाई बना दो, एक मॉन्यूमेंट बना दो, काम खत्म। अब वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर हो ना हो, इतना उनका एम्बिशन नहीं। ठीक है, so with that we can also move ahead with this question. Still, if any doubts, please let me know in the comment section. Question 3. According to the author, role of the patron was crucial. Why? Because of which of the following reasons? So we have to refer to the first paragraph here. First paragraph I have written, highlighted all this part यहाँ पे, कि a patron decided a lot of features, important features of the piece of work, piece of art that is going to happen. कौन सी पेंटिंग होगी, कहाँ होगी, कौन सा मटेरियल यूज होगा, उसमें स्टोरी कौन सी बताई जाएगी। ठीक है, इज इट गोइंग टू बी मैन और वुमन और सम स्टोरी फ्रॉम बाइबल, गॉड बताएंगे नहीं बताएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें
पेट्रन डिसाइड करता था कि पीस ऑफ आर्ट में कौन जाएगा। तो आंसर हैज टू बी आंसर ऑप्शन बी। The patron decided the most important characteristics and features of the art. Option A goes really overboard when it uses the quantifier every. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में क्लियर कट बोला है कि knowing about a patron can never explain everything about the art of it. क्लियर कट एक्सप्लिसिटली बोला है कि पूरी की पूरी कहानी हम नहीं समझ सकते, बट ऑप्शन ए कहता है नहीं, सब कुछ समझ जाएंगे। वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन सी में भी देयर इज अ डिस्टॉर्शन इन द फॉर्म ऑफ दिस ओनली। ठीक है, व्हाट वी नो इज कि बड़े बड़े वर्क्स ऑफ आर्ट, सिग्निफिकेंट फेमस प्रोजेक्ट्स, दे वर कमीशन्ड बाय पेट्रन्स। पैसे वाले लोग, पॉलिटिकली पावरफुल लोग बनवा कर लेते थे। बट क्या सिर्फ ये काम वो ही लोग करते थे? ओनली दोज गाइस? नोवेयर इज इट मेंशन्ड, कैन नॉट मेक गारंटीज लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली ऑप्शन डी में भी वही गलती है, ऑल एग्जिस्टिंग आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट। नो सर, नो, नॉट एट ऑल। ऑल एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग सिग्निफिकेंटली फेमस आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स, दैट्स। ठीक है, तो वेरी वेरी इजीली एलिमिनेटेड ऑप्शंस ओवर हियर। एक एक वर्ड, एक एक क्वांटिफायर की वजह से पूरे ऑप्शंस का पानी पानी हो गया। ओके, तो लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसके अंदर में देयर इज अ बिट ऑफ एम्बिग्यूटी। व्हाई? बिकॉज आंसर ऑप्शन ऑफिशियल गिवन इज बी। नाउ आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद बी एक्चुअली। व्हाट डज बी से? कि sculptures of women on tombs were found only if the husband acted as the patron. लास्ट सेकंड पैराग्राफ देखेंगे, ये सैसेटी चैपल वाला एग्जांपल। वहां पर क्या लिखा है हमारे पास में, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी हैव? कि वाइव्स समटाइम्स अपीयर्ड एज नीलिंग डोनर्स अलोंग विद देयर हस्बैंड्स। बस। अभी ऐसा भी हो सकता है कि वो काम शायद हस्बैंड ने करवाया हो, या फिर शायद हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बाद में वाइफ ही करवा रही है। कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ की साथ में आपको मूर्ति मिलेंगी या फिर साथ में पेंटिंग मिलेगी। व्हाट डज ऑप्शन बी से? कि नहीं, ये कब पॉसिबल है? ओनली एंड ओनली इफ द हस्बैंड इज डूइंग दिस। मतलब एक कोई वुमन लाइक एलिजाबेथ खुद की एफिजी, खुद की पेंटिंग कभी नहीं बनवाती। नो, नॉट एट ऑल। क्या जरूरत है इतना एक्सट्रीम गारंटी लेने की? कैन नॉट बी इन्फर्ड। सो यस, फिट्स इन लाइन विद what is given over here in the question, what we are supposed to find out. But what does this imply? ऑप्शन बी अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यू आर डिक्लेयरिंग दैट ए, सी एंड डी, these three can be inferred. But please come with me and visit option C. What does it say? Let's change the color. Okay. कि दो थ्रू इंस्क्रिप्शंस ऑफन द रोल ऑफ पेट्रन वाज सिग्निफाइड। ओके, बहुत अच्छा। कि आप इंस्क्रिप्शंस करते हो, वहां पे आप कोट ऑफ आर्म्स छोड़कर जा रहे हो बिल्डिंग में, उससे पता चलता है कि पेट्रन कौन है, उनका क्या रोल था उस चीज के बनवाने में। गुड। आगे क्या लिखा है उसमें बहुत गलत डिस्टॉर्शन। इवन इफ द पेट्रन वाज नॉट प्रेजेंट फिजिकली एट द फ्यूनरल। इसका मीनिंग जानते हो क्या है सेकंड हाफ का? कि जब फिलिप की डेथ हुई, जब हस्बैंड की डेथ हुई, तो उस फ्यूनरल में, उस मैयत में, उस जनाजे में उनकी वाइफ नहीं आई, वो प्रेजेंट नहीं थी उस मैयत में। तो ऐसे केसेस में उस बिल्डिंग के ऊपर उस पेट्रन, उस एलिजाबेथ का नाम लिख दिया जाता। बट इज दैट व्हाट द पैसेज इज टेलिंग अस? नो, 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 नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। कम विथ मी, लेट्स से व्हाट द पैसेज सेज। पैसेज क्या कहता है कि, वन मोमेंट, last paragraph. However, even if a widow did not make a personal appearance where? In her husband's funerary chapel. Now this is a bit different. What does it mean? कि जब हस्बैंड की डेथ के बाद में जब वो बिल्डिंग बनाई गई, तो आप उस बिल्डिंग में ना एलिजाबेथ की पेंटिंग करवा रहे हो, ना एलिजाबेथ को डेडिकेटेड कोई स्टैचू बनी है वहां पर। तो इन दैट केस व्हाट वुड अ गाय, सॉरी, व्हाट वुड अ वुमन लाइक एलिजाबेथ डू? She would remind future generations of her role as a patron through an inscription. कि ठीक है, मेरे नाम की यहाँ पर मूर्ति नहीं है, मेरे नाम की पेंटिंग नहीं है, बट मेरा नाम या फिर मेरे फैमिली का एम्बलम मैं यहाँ पर छोड़कर जाऊं। एंड ऑप्शन सी वंस अगेन, व्हाट डज इट मेंशन?
कि अच्छा एलिजाबेथ आप ना यहाँ पे मैयत में ही नहीं है। अच्छा जी ओके, आपको घर पे काम था, ठीक है, आपके नाम का ना हम यहाँ पे इंस्क्रिप्शन छोड़ के जाएंगे। व्हाट द एफ, कहां से इन्फर कर सकते हो आप? सच अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन नॉट प्रेजेंट फिजिकली एट द फ्यूनरल एंड नॉट मेकिंग अ पर्सनल अपीयरेंस इन द चैपल। वेरी डिफरेंट थिंग, वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। तो अकॉर्डिंग टू मी सी कैन ऑल्सो बी नॉट इन्फर्ड। तो बी और सी दोनों मेरे हिसाब से नॉन इन्फरेबल स्टेटमेंट्स है। ए एंड डी यू कैन इन्फर, नो प्रॉब्लम देयर, बट सीवियर रिजर्वेशंस विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड सी बोथ। सो माय वर्डिक्ट व्हेन इट कम्स टू अ क्वेश्चन लाइक दिस, यू कैन सी टू ऑप्शंस जो दोनों नॉन इन्फरेबल है। व्हाट यू शुड डू इन सच क्वेश्चन दिस, स्किप। ठीक है, अनअटेम्प्टेड छोड़ना चाहिए। अब आंसर एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी क्यों है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ऑफिशियल आंसर गिवन इज बी, आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम विथ इट, बट ऑफिशियली व्हाई दोस गाइस थिंक कि सी भी इन्फर किया जा सकता है, आई एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया। ठीक है, तो वंस अगेन माय वर्डिक्ट, बी एंड सी बोथ आर गुड आंसर्स हियर। अब दो आंसर्स पॉसिबल नहीं है एट द सेम टाइम, हेंस व्हाट यू डू इज स्किप। ठीक है, I hope that you enjoyed the passage and also liked the explanation. If yes, please like, share, subscribe to our channel. Also drop your suggestions and any doubts or queries regarding the exam or PRC prep in the comment section. More than glad to help you. Till then, tata, bye bye, and I'll see you in the next video. Take care.